Jai Hind, a very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है Shubham Varshney. So today what we are going to do right now, we are going to talk about a video that is repeaters interview. And that interview was conducted by Major General Bhakuni. Now this video is very important. This video went viral for almost 2 to 3 months among a defense aspirant. And that video gave a lot of knowledge to defense aspirant. But I still found that some knowledge is hidden or skipped because of not getting inside of it, not getting inside of the General Bakuni's question, not getting inside of that guy whose interview has been taken. So I just drill into the video and try to find out those things which can be taken and can be used in SSB. So let me very clear in front of you. I'm a defense aspirant, you are a defense aspirant. I got this idea from reaction videos, so I decided to conduct this to make this video. So one defense aspirant talking to another defense aspirant, so just take it as a positive conversation kind of, and whatever you think just put in the comment section. We will work out on that, and if any great idea come out, we will work on this. Or somewhere if you find me I'm lacking somewhere, please correct me. I will surely acknowledge it. So let's start. So you are ready for a interview of a repeater? Yes, sir. So on popular demand, we are going to record it. Today, you are going to actually see how a repeater is handled by the interviewing officer. Usually, the repeaters feel themselves a bit down while going for the interview process. They feel that they are always bunched together in a repeaters group. They are treated differently because all are experienced in their group, and their group becomes virtually a fish market. And perhaps their chances of success are very less because large number of them haven't get screened out. This is the doubt in their mind. See, over here I just stopped because to tell you that General Bakuni smile is very dangerous. And not General Bakuni. I do not have any enmity to General Bakuni, sir. He's a very wise man, and I'm glad that I had an opportunity that I had a talk with him on a call. But the smile is extremely dangerous of any person entering officer. See, if you are fresher, you do not know that the smile is used to just to make you comfortable and so that you become so friendly and you say everything. So do not get so indulged in the smile or the talk of interviewing officer that you spell out everything about your life, even it is negative. आपसे बोला भले ही जाता है कि सच बोलना, ठीक है, झूठ मत बोलना, बट ये किसने कहा है कि सारा सच बोल देना? आप समझो, अगर आप समोसा खाते हो तो तेल निकाल के खाते हो ना, कि भाई ज्यादा तेल ना जाए. इस बात को ध्यान में रख के आप काम करो आगे. आप जरा आगे बढ़ते हैं. जनरल बाकुनी के और क्या शब्द हैं, ऐसे ही हम अभी टॉक सॉल्व करते रहेंगे. But let me tell you, See what kind of smile he has. A very strong, impressive smile he has. Look at this. Candidates who make it in the service selection board are repeaters, including me in front of you. I was a repeater. So because first time you go for the SSB is you are not really familiar with the selection process, and it takes time for you to understand, because most of the candidates who tend to go for the first time without having a clue of the SSB, and in the second attempt you'll find large number of candidates make it. I myself, being a president of the board, had passed a candidate in the 11th attempt, a candidate in the 8th attempt, 5 to 7 attempts, many number of them. But a word of caution here. If you feel after the 5-6 attempts that perhaps you are not the material for the armed forces, you think that you are not really made for the armed forces, I will recommend that you should think of an alternate career. No one better than you yourself know that, whether you are suitable, whether you are the right material, whether you are a potential officer or not. Okay, I like to again take a pause over here. The word right now General Bakuni has said is amazing. What he said कि अगर आपको किसी भी मोमेंट में पता लग रहा है कि आप में ये खूबी नहीं है तो करियर स्विच कर दो. बट दिस इज द हाफ चैप्टर.
अभी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप 15 ओवल क्यूज हैं, उन्हें देखो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यार ये क्वालिटी मुझ में नहीं है। माइट बी सोशल अडेप्टिविटी, माइट बी कम्युनिकेशन, माइट बी कुछ भी हो, उसको डेवलप कर लो। देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम टेट वेट एसआरटी सीख लो, कोई भी सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने पर्सनैलिटी में चेंज नहीं किया तो टेट वेट एसआरटी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेस सिचुएशन में तुम कितना भी सीख के जाओगे, असलियत अपने आप बाहर निकल आएगी। सो बेटर कि वो 15 OLQs हैं उनको देखो कि उनमें तुम्हारे में असलियत में कौन सी नहीं है, एंड स्टार्ट डेवलपिंग इट इन रियल लाइफ। सोशल एडेप्टिव नहीं है तो बदल लाना शुरू कर दो, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो लाना शुरू कर दो, स्टैमिना नहीं है तो लाना शुरू कर दो, बट उनको लेकर आओ और रियलिटी में तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। टेट वेट एसआरटी सीखना अच्छी बात है, बट पर्सनैलिटी में एक्चुअल में होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। So whenever this thing comes from your heart, I think you should change course. It's better to adjust in life and move on. So I will recommend that. But if you think you are passionate about it, if you think you are capable about it, why not come forward and keep trying till the time you pass it. The decision lies with you and your decision is going to be the best. So are you ready for a repeaters interview? Yes, sir. Okay. Today you will see how it is different, how the interviewing officers handle it in a little different manner, how those CIQs which I have told you are not actually asked, these questions are asked in the same fashion. He may change the sequence. And what the interviewing officer is really keen, he's keen on how the candidate has improved from his last attempt, what lessons he has learned, whether he has been able to introspect or not, whether he is able to identify his mistakes or not, and how what actions he has taken to overcome those mistakes. Is he better prepared? Has he taken pains? Has he worked hard on those weaknesses which he noticed? If the answer is yes, if the interviewing officer feels that yes, this candidate has really improved and has done far better, obviously the chances of his selection become that much higher. ये वर्ड्स बहुत कमाल, जरा दोबारा सुनो क्या कहा, और सी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ जनरल बाकुनी सर। इन्होंने एक ऐसी बात यहाँ पर कर दी है कि जिसको बात समझ में आ गई वो निकाल ले गया, मतलब उसने शहद निकाल लिया। समझ रहे हो मेरी बात? अभी जरा मैं 10 सेकंड पीछे कर रहा हूँ, उसको दोबारा ध्यान से सुनो। If the interviewing officer feels that yes, this candidate has really improved and has done far better, obviously the chances of his selection become that much higher. See, much high. अब सोच के देखो, अगर आप किसी भी कर्नल ब्रिगेडियर को जानते हो, मिले हो, तो आप उनसे पूछना बात करोगे, क्योंकि मेरी बात अब होती है जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ऑफ द रिकॉर्ड हमेशा ये बात होती है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको अपने बारे में पता हो, जिसको अपने बारे में अवेयरनेस हो। अब यही क्वेश्चन यहां पर है, आप रिपीटर हैं एसएसबी में, आपको क्या नॉलेज है, आप फेल क्यों हुए? चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, आप रिटन में क्यों फेल हुए, कि आपको अवेयरनेस है इसके बारे में? बिकॉज ऑफ लेस रिसर्च दे आर नॉट गेटिंग अवेयर ऑफ देयर वीकनेसेस, देयर फेलियर्स। इट इज नॉट वेरी गुड आइडिया। वो वहां पर एक लूप होल क्रिएट हो जाता है इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई। आगे चलते हैं जरा। So I would like each one of you also to mark him. And you know the marking procedure, I have already told you the marks, etc. So you are also going to mark. Let me see how many candidates pass him, how many candidates fail him. We are an open book here because you got to face such kind of situation in the SSB tomorrow. So why not be better prepared for it? And we will exchange notes at the end of the SSB. So this is the hallmark of SSB Sure Shot Academy, where you guys are also participating in the interview process. That way you will learn the right lessons. So are you ready? Yes, sir. So we are going to call the candidate today after a little while. Thank you. Morning, sir. Good. एक बात नोटिस किया आपने, पहले उसने गुड मॉर्निंग किया है, ठीक है, वहां से उसने रिसीव लिया है। अब यहां पर हमें एक अदर साइड नहीं दिख रहा है, पर जनरल बाकुनी सर ने क्या करा होगा, हाथ बढ़ा दिया होगा, देन ही इज कमिंग फॉरवर्ड। सो दीज स्मॉल थिंग इज नीड टू बी टेकन केयर।
आप जब आर्मी के प्रोमाइसेस में घुसते हैं तो आप एक आर्मी का हिस्सा हो जाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा हो जाते हैं। तो आपको इन छोटी बात की एक हायरार्की का ध्यान रखना होता है। अब जरा इसमें एक आगे बात बढ़े। Morning, Tejas. How do you do? Fine, sir. Thank you. Please sit down. So, Tejas, all well? Yes, sir. So, how was your journey up to this place? Sir, it was pretty good, sir. Quite uneventful, but the sights were nice. Okay. You came by road, by air, or By train. By train. Which train did you come by? So I took a local, sir. It Okay. comes from Bangalore to Mangalore. Okay. Okay, Tejas, since you are an experienced candidate, you've been already twice to the SSB, and unfortunately, both the times you got conference out. Yes, sir. So basically, I would like to know that what exactly happened. I know, Tejas, you would have really thought about it. You would have done your introspection. And I'm basically interested that what do you think are the reasons that you are not able to make the grade? अब ये क्वेश्चन सिंपल सा था कि एसएसबी में ऐसा क्या हुआ कि पहले आप रिकमेंड नहीं हुए। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर ये सवाल डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये सवाल डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आप अपनी बात पूरी नहीं कह पा रहे, सिर्फ 2 लाइन में सर समझ नहीं आया, सर मेरी खाली कम्युनिकेशन कम थी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चर्ड, रीजनेबल और एक अच्छे खासे कंक्लूजन पे आ रहा हो कि सर मैं ये सारी कमियां खत्म कर चुका हूं, अब मैं यहां पर हूं, तो मैं इसलिए आज आपके सामने कॉन्फिडेंटली बैठा हूं। अगर ये सब आ पा रहा है देन योर चांसेस, और मैं कहूं ये जो आंसर होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। अब जरा तेजस का सुनते हैं, उसने किस वे में दिया है। I've given it twice, the SSB. A little louder. I've given the SSB twice, sir. Okay. So the first time what happened was, I think my nerves got the better of me, sir. I knew what to do and how to do it. Okay. I got a little nervous because it was a little unfamiliar to me. Okay. So when I got back from my first SSB, I wrote down first everything, then I analyzed it and found out particular mistakes that I made in my GTO, psych and my interview process. And I realized most of it was because of nerves, sir. So I worked on that. I realized I could do much better with respect to that. On my second one, sir, again I overthought in my GTO, sir. So I ended up holding myself back. So basically, there weren't major mistakes. So there was one minor mistake which held me back in my second one also, sir. So in my GTO, sir, what happened was that I had to discuss loudly when our GD and our GP are happening, and one of my friends said that I got too over aggressive, sir. So that got stuck in my brain, and then I held myself back in my PGT. So that's the reason I didn't get through on the second time, sir. Okay. I will like to know basically 3 reasons. If I ask you on concrete terms, what were the 3 reasons that you were not able to make it? So the last time? Obviously, in the last 2 items. In the last, like I said, sir, the first concrete reason on my first attempt was basically nerves, sir. Yeah. In my interview, I knew answers, Yeah. and I couldn't explain them very clearly to the GTO because I got nervous in front of Okay. him. To the interviewing officer, sorry. Okay. And because I got nervous in front of him. The second time, sir, I overanalyzed myself. We have the short walk from where we do our GD to the GTO tasks, sir. In that, somebody said something to me with respect to me being a little too aggressive during my GD and my GP. So that's why I intentionally held myself back, sir. Okay. So those were the 2 main reasons why I didn't get through, sir. Okay. Can you see the perfectness in the answer? It is structured, it is reasonable, and it has come to the conclusion कि मैंने अब उसे दूर कर दिया है. Now I am on a thumbprint कि अब मैं recommend होने लायक हूँ. Tejas, if I ask you that what are your strong points and what are your weak points which you consider, and whether your weak points did play a part in your selection process adversely or not? Now अभी यहाँ पर उन्होंने एक सवाल पूछा, tell me your strength and tell me your weakness. What is the reason to ask this question? See, reason is very clear. वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अपने बारे में जानते हो, क्या आपको पता है आपकी कमियां क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या जवाब देते हैं कि मेरे में कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। अगर आपका ये जवाब है, इसको मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा अपने आप देखें जरा, क्या इससे बेहतर जवाब हो सकता है?
क्योंकि हर इंसान में परफेक्टनेस किसी में नहीं है, वी आर नॉट अ गॉड, सो बेटर टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द वीकनेसेस। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये था कि ऐसी क्या वीकनेस है जो आपकी पहली वाली एसएसबी में इम्पैक्ट करी आपके रिकमेंडेशन में होने में। अब देखो, पहली बात तो मैं आपको सीधे से बताऊंगा, अगर कोई वीकनेस ऐसी थी तो पहले उसे दूर कर दो। आप बता सकते हैं इंटरव्यू में कि हाँ सर ऐसी वीकनेस थी, बट अब नहीं है, अब मैंने उसे दूर कर दिया है। तो दैट साउंड पॉजिटिव, दैट साउंड इम्पैक्टफुल, दैट साउंड कि हाँ बंदा अपने आप को समझता है और कर रहा है। वही बात अगर घूम के आ जाती है। अब एक बात और, पर्सनल इंटरव्यू बड़ा आसान है। ये जो हमारे इंटरव्यू साहब होते हैं, जनरल बाकुनी है, कोई और होते हैं, इनको साफ साफ सरकार ने कहा होता है भाई हमारे लिए एक ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ के लेकर आओ, ऐसे कैडेट्स ढूंढ के लाओ जो फौज के लिए लायक हो। सो वो बैठे ही इसलिए होता है कि सिलेक्ट करना है। अब आप एक सेल्समैन होते हैं जिसको खुद को बेचना होता है, वो अगर ये बात पेश कर दे कि सर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना अपने आप को, वो कैंडिडेट है जो फौज के लिए लायक है, वो खर्च से ले लेंगे। दैट्स सो सिंपल आइडिया, कुछ और नहीं है इसमें। आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द नॉलेज ऑफ by talking to colonel brigadier rank people. So let's see what the words of Tejas. Tell me, what are your strong points and weak points? So my strong points are basically my determination and my ability to make friends quite fast. So I've come from a military background, so I've moved a lot. That has taught me how to make a lot of friends very fast. So, so getting along with people is very easy for me. And so with respect to my determination, sir, I've realized I've been through a couple of challenges in life. So to face those and still succeed, sir, showed me determination, proved to myself that I was quite determined, sir. Okay. So with respect to weak points, sir, I'd like to be more physically fit, sir. Quite blatantly, sir. Okay. I've been working on it, sir. I've lost about 13-14 kgs in the last 3 months, and I'm continuously losing, sir. Okay. So, but I still think it does hold me back, my physical ability. The second weak point that I have, sir, was the fact that I used to get angry at people when they would misrepresent the defense forces, sir. So when people, this only happened in college, sir, when I realized that people would say, oh, you get so many things for free, all of your canteen stuff is free and stuff like that. But I realized that I needed to see things from their perspective too, because they didn't have any exposure, and this came from a point of their ignorance, not out of malice, sir. So, but I don't think my weak points in any particular way played a part in me not getting selected last time, sir. Okay. Yes, sir. And what is the third one? I have these two major weak points in my opinion, sir. Any other weak point? Not that I can remember. Okay. Okay, Tejas, you said about your physical fitness. Yes, sir. And you lost 13 kg. Do you think when you made up your mind for the armed forces, you realized that you are physically not fit? Or the physical fitness was a thing in your mind which was playing up much before? Okay. अभी बाकुनी साहब ने एक बात यहाँ पर नोट करी कि भाई इस बंदे ने कहा कि सर मेरा जो फिजिकल फिटनेस है ना वो कमजोर है। अब ये एक इंसान में ना एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, और आपने लास्ट में अगर 15 ओवल क्यूज देखी है तो 15 ओवल क्यूज में लास्ट में एक और क्यू होती है स्टेमिना। उसमें भी दो पार्ट होते हैं, मेंटल स्टेमिना एंड फिजिकल स्टेमिना। तो फिजिकल स्टेमिना के अंदर वो आ रहा है और ये बंदा आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है, वो फिट नहीं है, क्या कारण है, अब ये वो कारण बताएगा। अब नाउ ये यहाँ पर फंस गया बिकॉज इट डू नॉट सो डिसिप्लिन कि भाई वो अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड है। क्या वो अपनी लाइफ में एक छोटी चीज फिटनेस नहीं डाल पा रहा, पूरे दिन काम करता होगा, राइट, उसमें सिर्फ आधा घंटा निकाल पा रहा, क्या कारण ऐसा बन रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हो सकता है कि इसी इंटरव्यू में तेजस को 2-3 बार पोक करा जाए क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड नहीं दिखी। अब देखते हैं तेजस का क्या जवाब है और सर आगे क्या करेंगे। So I don't think it was playing up much before. So my initial perception when I went for my first AFSB was that I'd go into academy and I'll get physically fit then. Little did I realize that I needed to show the GTO that I have the ability to do things. I need to be up to a certain physical standard, sir. So right after my SSB, I realized that I need to do this and I need to do this now. I can't keep putting it off. So that's when I realized that I need to lose weight and lose weight fast. Okay. Since you were passionate about the armed forces, don't you think that reducing 13 kg of weight just before the interview
or when you were going to face the service selection board was the right decision, or you are supposed to keep yourself physically fit all the time? What was preventing you to keep yourself physically fit all the time? So actually what had happened in a long-term sense, so when I joined college, it had resulted in me losing quite a bit of weight. But in my final semester, sir, we were under a lot of academic pressure. So we had to complete a lot of things fast and within deadlines. So that didn't allow me to actually go out and get physical activity. I would spend 13 to 14 hours in front of a laptop coding just to complete my final project, sir. So that ended with me gaining a lot of weight, sir. So that is the primary reason that I did become unfit in the first place. So I would do a lot of recreational stuff in college, swimming, etc. Not competitively, but recreationally, just to keep myself fit. Okay. अभी यहाँ पर जो तेजस है उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया सर, मेरे को प्रोजेक्ट करना था, 13 से 15 घंटा काम करना पड़ता था, तो उस वक्त मैंने छोड़ दिया। बट आपके दिमाग में एक सवाल आएगा यहाँ पर जो शायद अभी सर पूछने वाले हैं, भाई आप ठीक है, आपको काम करना पड़ता होगा 13 से 15 घंटे, बट आपको ये बात पता होगी कि अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा, मेरा वेट बढ़ेगा, तो मुझे उस टाइप की चीजें खानी होगी जिससे मेरा वेट ना बढ़े, थोड़ा कम खाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो बात इंसान ऐसा लग रहा है तेजस घुमा रहा है, बार बार घुमा रहा है कि बस वो किसी तरह से फिक्स हो जाए और यहाँ से अब कहानी आगे चले, बट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर वो अपनी बात समझा रहा है। सो लेट्स सी जनरल बाकुनी कितना कोरोते हैं इस चीज को। Just tell me, when exactly you thought about the armed forces, and was it your dream or you thought it just as another option? No, sir, I don't consider the armed forces as another option, sir. Ever since I was probably 7 or 8 years old, I had wanted to join the Air Force, sir. I had seen aircraft all my life, sir, and flying became a passion of mine, sir. Okay. You know, the pilots are supposed to be absolutely fit. If armed forces, particularly becoming a pilot, was in your mind. Yes, sir. And you say you have determination as one of your core quality. Yes, sir. Then it surprises me what prevented you to keep yourself physically fit and wait for the SSB and lose 13 kg weight, and yet you seem to be a little overweight. So determination is something that allowed me to lose those 13 kgs, sir. Okay. I kept myself on an extremely strict diet, sir, worked out twice a day. Okay. So moving on from, I was physically fit when I joined college, sir. I became more fit in college, sir. But given the fact that I needed to graduate and I needed to graduate successfully with a very good percentage, sir, it's a trade-off that I had to make, sir, because I couldn't sacrifice those 2-3 hours and then get delayed on my deadlines. If I get delayed on my deadlines, sir, my project gets delayed, I don't graduate on time, sir. If I didn't graduate on time, I couldn't move on and then give the CDS and the AFCAT exams on time. Okay. मैंने आपसे भी कहा था कि जनरल बाकुनी सर को पता लग गया हुआ है, बंदा ना इसे फिक्स कर रहा है। सही बोला बंदे ने, स्ट्रक्चर्ड वे में पहले ही बोला, बट जनरल बाकुनी सर को समझ में आ गया बंदा फिक्स कर रहा है। अभी सर ने वही बात बोली कि आप डिटरमाइंड कह रहे थे, अपने आप को फलाना कह रहे थे, और कहाँ आ गए आप। अभी तेजस ने जब बोला, इट सेड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, और उसने अपनी बात मानी कि हाँ सर मैं ओवरवेट हूं, मैं मान गया ये बात, बट मुझे इस बात का रियलाइज है कि सर अगर मैं टाइम से बीटेक नहीं पास की अच्छे नंबरों के साथ, तो मैं सीडीएस एफकेट नहीं दे पाऊंगा और ये जो मेरा सपना है वो छूट जाएगा। सो आई नीड टू वर्क हार्ड टू गेट अ बेटर मार्क्स एंड गेट सिलेक्टेड एंड गेट रिकमेंडेड। वेरी गुड आंसर, एंड आई पर्सनली बिलीव अब यहाँ से जनरल बाकुनी साहब इस बात को दोबारा नहीं पूरा देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको क्लैरिटी आ गई है कि बंदा डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर्ड है, डिटरमाइंड है, उसका एम है फ्लाइंग, एक ऑफिसर बनना, अपने फादर जैसी जॉब करना। सो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Okay, tell me, since you want to become the pilot, tell me the 3 best fighters we have. Tell me which is the best fighter in the world as of now, in your opinion, and which is your dream aircraft which you would like to fly. So the 3 best fighters in my opinion will probably start with the Mirage 2000 because of its multi-role capability, the MiG-29 upgrade and the Sukhoi 30 MKI. The best in the world would probably be the Dassault Rafale because of its ability to have an extensive data link capability between not just its own aircraft but with multiple aircraft of varying generations. So I can data link a Su-30 with a Rafale also. So that is one of its core reasons why it is probably one of the best in the world, sir. Okay.
Do you foresee a possibility, say in next 5 to 10 years, that the aircrafts being flown by the robots? So given the fact that, so as far as robots or artificial intelligence has come, so I have seen that, so it's been extremely hard for them to just make self-driving cars, and driving in a sense is a very mundane activity. So it's very predictable. On the other hand, combat in an airspace, sir, when you have 3 dimensions, you don't know where your enemies, etc. are. I think it's at least about 30 odd years away, sir, in my opinion. 30 odd years. Yes, but sir. you feel there is a distinct possibility for that? So I think the possibility is of this, the concept is called the unmanned wingman concept, sir, where you do have a pilot in the plane, but the other planes following it in, say, a flight could be unmanned and automated, sir. Okay, tell me 3 things which the aircraft must have in order to be the best competent aircraft in the battlefield. Do you think it is the speed, it is the maneuverability, or it is something else? Tell me 3 things which the aircraft must have. 3 and things. in that, as in the latest aircraft which we have acquired from the France, does that fulfill these 3 requirements? Okay, so one of the first 3 things would be good maneuverability while maintaining low visibility. So the aircraft you're talking about is the Dassault Rafale, sir. So that has a delta wing design which allows it to be to have low visibility, but also have extremely high instability aerodynamically, which makes it more maneuverable, sir. Okay. So low observability via radar and that. Okay. Excuse me. And the ability to maneuver quick and well it's in its delta wing design, sir. With respect to the weapons it employs, sir, it employs a huge range of weapons, everything from air-to-air missiles to to cruise missiles. So the array of weapons it uses also is quite outstanding, sir. And Very then briefly, understood. I know you are generally familiar with it. Can you tell me what was the controversy regarding this aircraft when we procured it from France? So the controversy initially began with they saying that the opposition parties in India saying that we did not buy enough. Then it progressed and stated that once the numbers that we are buying, the per aircraft cost is too much when they compared it to the deal they had. What is your opinion? Was there something fishy about it? Unlikely, so they didn't. The opposition party at that particular point in time, sir, didn't understand that we got a lot more than just the aircraft. We got a lot of transfer of technology. We got a lot of arms and armament with it, including the Mica IR and the Storm Shadow missiles, sir. Understood. Okay, let's move on. ओके अभी आप जरा नोटिस करना, जब मैंने लास्ट पॉज लिया था तब बात हो रही थी जब तेजस बाबा कह रहा था सर मैं अपनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर बन सकूं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकूं, सीडीएस दे सकूं। नाउ उसकी बातों से ही वो कैच कर रहे हैं। अब देखो मैं लेमैन भाषा में बात करता हूँ, मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट नहीं हूँ, ठीक है। अब लेमैन भाषा से मुझे बात पता लग रही है कि जनरल बाकुनी सर ये बात पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई तू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। उसने फ्लाइंग पे स्ट्रेस दिया कि कम टू द फ्लाइंग। भाई तुम बाबा फ्लाइंग ऑफिसर की बात कर रहे हो, क्या तुम सच में उस बात पे एडमिट करते हो? अब यहां से आप यू कैन टर्न द टेबल टू योरसेल्फ। मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग जा पाओ, आपके पास इतने पैसे हो, आपके पास इतनी क्षमता हो, या आप गांव में रहते हो, डजंट मैटर। क्यों? अब यहां से आप समझो कि जो जो आप जवाब दे रहे हो वहां से वो आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल जो आया था बाकुनी सर का वो सिंपल ये था कि वो एयरक्राफ्ट के बारे में जानना चाह रहे थे। कौन से एयरक्राफ्ट आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, उनमें ऐसा क्या है, उनमें ऐसी बेस्ट क्या बात है। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने बात किया गया कि अभी एयरक्राफ्ट कौन से, मतलब आने वाले 10 साल में रोबोट्स और ये एआई का क्या रोल रहेगा। उसके बाद उन्होंने बात की कि एयरक्राफ्ट में ऐसी आप क्या चीजें देखते हो जिससे वो एक बेस्ट एयरक्राफ्ट बन जाता है। इसके बाद यहां से वो आगे चले तो उन्होंने बात किया, जब उसने डेसॉल्ट के बारे में बात की तो बात करें कि डेसॉल्ट है तो उसके बारे में देयर इज सम फिशी अबाउट इट, क्या कुछ स्कैम वैम हुआ था, क्या कुछ हुआ था क्या, उसकी वहां पर करंट अफेयर भी टेस्ट हो गई। एंड जनरल बाकुनी सर का आप देखोगे तो वहां पर ओके आई गॉट इट दैट यू हैव एन अवेयरनेस अबाउट इट। ओके, तो यहां तक मैं जो बोल रहा हूँ लेमन भाषा में बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं, बट यहाँ पर एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि जो बाकुनी सर हैं वो या कोई भी आईयू ऑफिसर होगा वो
चैन रिएक्शन कर रहा है कि पहले क्या पकड़ा था, अब क्या है और आगे उससे क्या कनेक्टेड होगा। अब लेट्स सी कि बाकुनी सर अब क्या पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई कनेक्शन छोड़ा नहीं है, उसको ने क्लियर बता दिया कि एयरक्राफ्ट की मुझे पूरी नॉलेज है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे उसकी पूरा ज्ञान है। Let's see what he say now, मतलब what he asks now. I would basically like to know a little bit about your academics. Tell me your journey from 10th class onwards. And I will be basically interested in your academic background and also your extracurricular activities. Tell me your favorite subject which you do not like and why. Tell me about your close friends and the kind of friends you do not like. I would also like to know about your favorite teacher and why you consider him so. And also the kind of teachers you do not like. Tell me, suppose armed forces is not in your luck because of some medical reasons, what is your alternate goal and how you want to accomplish it? Understood, sir. So, अब जरा यहाँ पर एक बात मैं दोबारा अटेंशन लाना चाहूंगा। अभी ये देखो यहाँ पर 19 मिनट हो गए हैं, इस इंटरव्यू को चलते हुए 19 मिनट हो गए हैं। अगर तेजस होगा तो तेजस भी थोड़ा थक गया होगा, इसने बहुत ज्यादा बोला है, अभी तक 1-to-1 क्वेश्चंस हो रहे थे, सडनली उन्होंने रैपिड फायर स्टार्ट कर दिया। आपके आईओ ऑफिसर, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर बता के स्टार्ट नहीं करेंगे कि मैं रैपिड फायर स्टार्ट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैड टू रिमेन अटेंशन एवरी टाइम। वो ये रैपिड फायर बहुत पहले भी शुरू कर सकते थे, रैपिड फायर बाद में भी शुरू कर सकते थे, तो आपका अटेंशन स्पैन एकदम रेडी होना चाहिए कि हाँ हाँ क्या बोला और ध्यान से सुन रहे हो आप। अब दूसरी बात ये, अब बिकॉज आई टुक द कोचिंग, आई कांट नेम इट, बट मैंने एक बात खराब देखी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं, वो खराब बात ये होती है कि उनको रैपिड फायर रटे हुए होते हैं। अब रैपिड फायर रटे होने का नुकसान क्या है कि मान लो कुछ मिस कर देते हैं ना, तो रटा हुआ रैपिड फायर जो मिलता जुलता होता है, जैसे सर ने बताया अभी एकेडमिक्स के बारे में बताओ, फ्रॉम क्लास 10 देन योर लाइक डिसलाइक योर टीचर्स योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब ये सब जो बताया, मान लो कुछ मिस कर दिया तो हम रिकॉल बैक करते हैं कि कोचिंग में हमने क्या याद किया था। दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमें इंप्रेस करना होता है आईओ को, करेक्ट। सो यहाँ पर गलती हो जाती है और आईओ पकड़ लेता है कि यार ये कोचिंग ये कर रहा है, ये मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है और ये कुछ और कर रहा है, तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अभी तक सब जितने भी आज तक कोचिंग वाले सबको रटा हुआ है, एकेडमिक्स 10th, फिर लाइक टीचर लाइक फ्रेंड्स लाइक डिसलाइक, उसके बाद एक्टिविटीज इन स्कूल एंड कॉलेज, फिर होम में घर वालों सब क्या करते हैं, सारा रटा हुआ होता है। पर मूवमेंट एक छोटा सा चेंज पूरा का पूरा आईओ का पर्सनल इंटरव्यू खराब कर देगा और आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि आप एक गिफ्ट हो और उसको रैप कर दिया अच्छी तरह से, जिससे पता ना लगे कि बंदा पोस्ड है। मेक श्योर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात होती है और तेजस कैसे बात करता है। So 10th onwards, my scores were quite consistent, sir. So 10th onwards, I got about 93.1, sir. 11th, it dipped a little bit to the mid 70s, sir, but I brought it back up in 12th to 84, and I graduated with 9.13 CGPA. In percentages, that is about 91.3%. Co-curricular activities, sir, they varied from school to college. So initially, I was quite into sports with respect to basketball and football, sir. I played on my school and house team when I was in 10th, and I played on my basketball team in 12th for my house and my school, sir. In my 12th, I realized that I had a penchant for public speaking and debating, sir. So my English teacher introduced me to debating, and debating became MUN, Model United Nations, in college, sir. So that is with respect to my co-curricular, sir. With respect to my friends, sir, I've had a pattern, sir. Since I've moved around a lot, I generally make friends with a lot of people quite fast, sir. And then as we spend time together, I maintain those friendships, but I also develop a smaller core group of friends who probably share the same interests. So we do a lot of things together and things in common, sir. So we have a lot of, I have that big group and a core group, sir. So I was friends with a lot of people in my hostel blocks, etc. But my roommates were very close to me. Similarly, in my MUN society also, sir, I had a core group of friends, juniors and seniors. But I was friends with, I wouldn't have a problem hanging out with anybody in my society. Moving on to teachers, sir. Subjects first, sir. Subjects, I had a very big interest in computer sciences, sir. Okay. So computer science is something that I was taught early on from 9th onwards. Our computer teacher was she would take a lot of initiative. Anybody who'd show any interest in computer sciences was something she would actually work very hard on to introduce us to the subject, sir. Okay. With respect to not
being fond of subjects, sir, I wasn't a very big fan of languages, sir. So just the learning curve to learning them was a little too hard and didn't have a lot of reward attached to it, sir. If I was going to learn Russian in, say, college, sir, there was nowhere I could practice it, nowhere I could use it in practicality. So subjects I didn't like didn't have a practical aspect to it. With respect to teachers, sir, I've had very favorable relationships with my teachers, sir. Very rewarding ones also for both students and teachers, sir. I've always liked teachers who take an active initiative in people who'd find interest in the subject, sir, who'd help us push ourselves harder, sir. And conversely, sir, I had a couple of teachers in college, sir, who would just come up and read PPT slides, so they didn't show a lot of interest in us or the subject that they were teaching us, sir. So those are the teachers I kind of didn't like, sir. Okay. Anything have you left? Okay, tell me, suppose armed forces is not in your luck, what is your alternative goal? अभी ये वाला जो बात है कि अगर आप आर्म फोर्स में मेडिकल की वजह से नहीं हुए, ये बात छोड़ गया था तेजस, जबकि ये रैपिड फायर में पूछी गई थी. अगर आप रैपिड फायर जरा दोबारा सुने, मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ रैपिड फायर. Understood. Okay, let's move on. I would basically like to know a little bit about your academics. Tell me. Now listen the rapid fire very carefully. You will come to know कि यहाँ पर तेजस ने क्वेश्चन छोड़ दिया था. Your journey from 10th class onwards. And I will be basically interested in your academic background and also your extracurricular activities. Tell me your favorite subject which you do not like and why. Tell me about your close friends and the kind of friends you do not like. I would also like to know about your favorite teacher and why you consider him so. And also the kind of teachers you do not like. Tell me, suppose armed forces is not in your luck because of some medical reasons, what is your alternate goal and how you want to accomplish it? Did you hear it? Because वो एक chain reaction का part नहीं था last वाला question that if you do not get medically fit in the SSB boards, then what's your alternate career? So यहाँ पर ये मिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मन से जो कोचिंग में आपने सुना है या किसी ने आपको रटवाया, कोई किताब पढ़ी आपने, तो वो आप उल्टी करके वहां पर डाल दो. वो फट से तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे वहीं से. अब जरा वापस आते हैं. Suppose armed forces is not in your luck, what is your alternative? My alternative is that I've already gotten into a postgraduate degree for international studies, sir. So I'll keep giving my SSB attempts until I get through, sir. So I'm quite sure I'll get through this time, but if that does not happen, I'll keep giving it until I get through. Okay. So after international studies, I'll probably specialize in strategic studies or cyber warfare, and then probably work for a think tank like the Center of Air Power Studies, IDSA or something like that, and then go on and get a PhD from probably King's College in London. They have a war department, probably specialize in that. Okay, since you are very keenly participating in football and basketball, can you tell me what is the significance of small d and big D in the football? Why they are kept? What is the requirement of 2 Ds? So the small d and the big D, sir. So I left football in my 10th class, so I can't recall that. Okay, what is this 5-second rule in basketball? So 5-second rule in basketball generally applies to you the amount of time you have to shoot inside the D. And tell me the legendary basketballer who you think was the greatest ever player of the world. So I'm quite partial to Steph Curry, so Stephen Curry. He plays for the Golden State Warriors. So he still plays, and I don't follow it that much, but even given his height, the amount of success he's been able to achieve, even though he has limitations, is something that is very admirable. So you take LeBron James or any other great basketball before him, so Larry Bird or whoever, so they all have had the natural advantage of height, so. Okay, tell me very briefly about your family. I would basically like to know who all are there in your family. Tell me who's your role model. Tell me 3 positives and 2 negatives of your father. What activities you do in your neighborhood whenever you come home. And in what way you feel you contribute to the happiness of the family. Happiness, okay, sir. So my family consists of my mother, father, and my sister, sir. My mother's a homemaker, my father's in the Indian Air Force, and my sister's currently in her 5th year of 5th year internship in MBBS, sir. So, speak a little louder. Sorry, sir. So 3 positives and 2 negatives of my father. My father is extremely determined, very hardworking, sir. So he also
tries his best to make time for his family, sir, whenever he can. On the flip side, sir, negatives of my father are that he is sometimes quick to anger, and another one would be the fact that he doesn't spend as much time with his family that he should, sir. Now there's a contradictory. तेजस ने दो बातें कही कि उसके फादर जितना टाइम दे सकते हैं वो देते हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव बात ये उसने बोली कि उसके फादर टाइम नहीं दे पाते। दैट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग। अब यहाँ पर जनरल बाकुनी सर इसको पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या रहेगा वो देखते हैं। प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ये पूछना चाहेंगे कि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप किससे बात करते हैं, बिकॉज तेजस ने एक बात कही कि उसके पापा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो प्रोबेबली वो पापा से दूर भागता होगा, उसके पापा से रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होंगे। लेट्स सी, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ लेमैन कि क्या होगा। Okay. My role models are both my parents, sir. Within my family, sir, if you ask my role models, they'll be my parents, sir. So my father, for obvious reasons, sir, he's actually living my dream job. He's extremely hardworking, extremely determined, sir. He's a very good officer. Okay. My mother, sir, because she's done a lot in her life, sir. So the amount Suppose of you have to opportunities- share something very personal. Whom would you share with, your father or your mother? So actually, this has come up, sir. So generally, I go to my father with professional problems that I'll have, sir, with respect to career aspects, etc. And personal problems, I'll generally go to my mother. Tell me, what does your father finds in you? Tell me two good things which you finds in you and two bad things which he tells you repeatedly to improve upon. Starting with the good things, sir. He understands how determined I am, and he understands my drive to join the Air Force. So that is something that very few people understand, and sharing that with him is he realizes that's a very big asset when it comes to me. So my determination and my ability to make friends again, sir. Okay. My two core strengths, sir. Weaknesses, sir. Again, physical ability, sir. And another thing that he keeps telling me to change myself would be to stop spending so much time in front of a screen, sir. I'm a CS student. I would Okay, to stop in front of. spending so much time in front of a screen, sir. I'm a CS student. Okay. So my work happened on a screen. Any reading I would do would be in front of a screen. Okay. Any leisure activities I would do would be in front of a screen eventually, sir. Okay, let me ask you the next question on screen only. You know, the computer's advancing day by day. Yes, sir. What kind of computer you see after 10 years? Now people ask कि यार टेक्निकल एंट्री है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। See, they do not go for a very deep thing. See, I am a mechanical engineer basically. अभी मेरे से कोई नहीं पूछेगा what is the definition of stress, what is force, what is the formula of force. They're going to always ask those things which are too common. अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, so mechanical cars are going to turn into a petrol diesel car is going to turn into electric car. So what are the future of the cars? Are you getting my point? यहाँ से सोलर कार्स का कुछ ऐसा बन सकता है क्या? These kind of question will come क्योंकि ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है। They are not interested to go deep hard. Trust me, अच्छा एक बात सोच के देखो, हर ऑफिसर को हर चीज की नॉलेज कैसे हो सकती है? He almost going to have a knowledge of those things जो करंट अफेयर में चल रही है बात, और वो वहीं से रिलेट करके पूछेगा। और ऐसा ही यहाँ पर बाकुनी सर ने तेजस के साथ किया। स्ट्रीम की बात की, कहीं उन्होंने कुछ आर्टिकल पढ़ा होगा आने से पहले यहाँ पर, तो उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई स्क्रीन आने वाले टाइम में कैसी होंगी। और नाउ दिस क्वेश्चन इज पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ तेजस। अब तेजस कैसे जवाब देता है, यहाँ पर कहानी आती है। Will it have a screen, or how the computers will be actually operated? Sir, 10 years down the line, with respect to say screens, sir, I expect holographic images, sir, things that you can actually interact with in the air. While when you come to processing power, sir, I imagine that there'll be a lot of more artificial intelligence actually controlling the amount of processing power one actually needs, and most of that processing power not coming from hardware that we own, but hardware that we rent on the cloud, sir. Okay, Tejas, let's move on. Can you tell me what is the difference between SARC and ASEAN? अब ये सवाल क्यों पूछा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड आसियान? कहीं पे कोई बात नहीं चल रही थी। आई थिंक ये जो है 2-3 महीने पहले पूछा गया था, और सार्क और आसियान में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। फिर ये क्यों पूछा गया? सीधा क्वेश्चन, अब मैं लेमन भाषा में बात कर रहा हूँ कि क्यों पूछा गया होगा। लेट्स सी द गेसेस की अभी यहाँ पर तेजस सब कुछ सही दे रहा है, अब मुझे गूगली माननी है। अब गूगली में ऐसा हो सकता है कि जो तेजस होगा जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि गूगली क्वेश्चन है। सार्क आसियान में क्या फर्क है? सुना सबने है, पर फर्क किसी को नहीं पता होगा।
या इक्का दुक्का किसी को पता होगा सार्क का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, आसियान का यहाँ पर है, सार्क में इतने मेंबर है, आसियान में इतने मेंबर है, मैक्स टू मैक्स जो इसको रटने की आदत होगी उसको ये बात पता होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट इट कि दोनों की एक साथ न्यूज नहीं आती, सार्क में कंपैरिजन के, आसियान में, दोनों में कंपैरिजन के, कभी न्यूज नहीं आती। अब ये गूगली क्वेश्चन फेल हुआ, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अब स्ट्रेस लेवल जैसे ही आपका बढ़ेगा वो आपको वापस पीआईक्यू पे लाने की कोशिश करेंगे। दैट्स द कॉमन सेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद तेजस। Okay, so SAARC and ASEAN. SAARC is basically the Southeast Asian Association of Nations, sir. And ASEAN is the associations of no, so SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation, and ASEAN is associations of Southeast nations, sir. So their membership differs quite impressively, sir. Whereas SAARC has mostly India and its neighbors in Afghanistan. South ASEAN is more of a Pacific Eastern Pacific organization, sir, where you have Thailand, Laos, Cambodia, etc. Is India a member in that? So India is an observing member, sir. Okay, and where is the headquarters of both? So SAARC is in Kathmandu, sir, and ASEAN, if I recall correctly, would be in the Philippines, sir. Manila. Okay. Sure? Yes, sir. Okay, tell me, what is the impact of Pakistan closing the airspace for us? So, Or do you think it is going to be a permanent affair or it is a temporary issue? so I don't think, given the fact that it's not very big impact on us, so because the impact is happening on a core consumer who's say taking a very long distance flight, sir. That's the core impact that's happening in India, that fares are going up, sir, which is not a very big matter of discontent. But the amount of money that Pakistan is losing, sir, is tremendous. It's lost to about $100 million so far, sir. And for a nation that has 7 billion in foreign How do you reserves, think Pakistan is losing the money? It is actually India which is losing the money. not necessarily, sir. So the system is that whenever a plane flies over any particular country, sir, the operator of that plane has to pay something called an overflight fees. So that overflight fees is not going to Pakistan because we aren't flying anything over Pakistan. So that's how they're losing revenue, sir. Okay. Okay, tell me, two Nobel Prizes in any subject of the Indians whom you know and how they got it and when they got it. How and when, sir? Nobel Prizes, when I... Do you think any Indian has ever got it? Yes, sir. I'm quite sure that... अब जब ये सवाल पूछा गया होगा तो तेजस भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, यार इतना बेसिक सवाल मुझे क्यों नहीं आ रहा, मतलब मैं ये नहीं पता नोबेल प्राइज सबसे पहले किसने जीता। नाउ दिस इज अगेन अ स्ट्रेस बिल्डिंग सिचुएशन। अब तेजस की सिचुएशन देखो, आप पहले उससे एक सवाल पूछा गया आसियान और सार्क के बारे में, ही फॉर्म पर। अगला सवाल ये कि एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने, इम्पैक्ट क्या हुआ, और तेजस ने बेहतरीन जवाब दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक, अगेन सर ने देखा कि यार कॉन्फिडेंट आ रहा है बार बार, मुझे थोड़ा और उसको थोड़ा पोक करना है, अगेन गूगली क्वेश्चन फेंक दिया। दीज गूगली क्वेश्चंस आर मेड, अगर जनरल आइडिया लगाएं तो सिर्फ इस वजह से कि इंसान का स्ट्रेस लेवल में क्या रिएक्शन है, आइदर ही रिमेन न्यूट्रल और नॉट। इफ यू रिमेन न्यूट्रल देन दैट्स गुड। ऑब्वियसली जो बंदा स्ट्रेस में, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस में न्यूट्रल रह सके, उसके लिए तो मतलब आर्मी के लिए तो चांदी है, मतलब सोना है, वो तो बेहतरीन आदमी है। जो नहीं रह सकता वो बेकार इंसान हुआ। Have got it, sir. I think Rabindranath, one man called Satyarthi, sir, won it in for development, etc., sir. Development of what? I wouldn't know, sir. Okay, doesn't matter. Let's move on to the Statue of Unity. What do you think is the significance of it? So the Statue of Unity is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel, sir. It's extremely large and has been constructed in Gujarat, sir. So in my opinion, I understand the importance of it, the symbolic importance of it, sir. But he was somebody who did, in fact, unify India, sir. But given the fact that we have so many places that we need to improve upon with respect to, say, defense, economy, etc., sir, Okay. I think it was a wasteful expenditure, sir, and I think Sardar Vallabhbhai Patel would agree. Okay. Do you think it has not brought India to a different level? Sir, I don't think, in my personal opinion, sir, statues and monuments
aren't something that helps a nation or increases the prestige of a nation, sir. The increase of prestige of a nation is done by how well its citizens are living, how happy they are, sir, how well protected it is, how well the citizens are doing, in fact, economically, socially, etc. So that's where the prestige actually lies. So, in your opinion, all those historical monuments which India has inherited, so has got little or no significance? Not that, sir. That is not what I said, sir. Given the fact, say something less grand would have been better. Maybe, sir, a museum with something not as large of a statue in front of it, sir. I'm sure I know that in historical importance it does exist because we need to remember people like this, sir. Okay, tell me, which is the hottest planet and which is the closest planet? Coldest or closest, sir? Coldest, as well as the third is the closest planet to the Earth. See, we have again take the pause. See the pattern Bhakuni sir is doing. First, ASEAN and SAARC के बीच में डिफरेंस वेरी बेसिक नहीं बता पाया, थोड़ा लेवल ऊपर उठाया, जो भी सवाल था ये आसियान और सार्क का, ये बड़ा ही गुगली टाइप ऑफ क्वेश्चन था। उन्होंने कहा चलो स्ट्रेस में आ गया, अब जरा देखते हैं कैसे आता है ये। फिर उन्होंने कहा एक हार्ड क्वेश्चन, वो कहा कि अब एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया तो इंडिया को क्या नुकसान है। उसने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नहीं, इंडिया का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। फिर अगला उन्होंने गुगली क्वेश्चन फिर डाला उन्होंने कि नोबेल प्राइज सबसे पहले किसने जीता, जो हमारे तेजस भाई है वो जवाब नहीं दे पाए, फिर डाउन हो गया, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फिर आया होगा। देन अगेन एक क्वेश्चन पूछा बाय चांस, जो हमारे तेजस भाई हैं उनको आता था। क्या था वो क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल, कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसको बनाना चाहिए था, क्या इसका ग्रांट इतना देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। नाउ अगेन जब बाकुनी सर देख पा रहे हैं कि यार मैं इसको बार बार स्ट्रेस में डाल रहा हूँ, बार बार ये उठ के आ जा रहा है, फिर स्ट्रेस में डाल रहा हूँ, फिर उठ के आ जा रहा है, तो वो एक आध ये आखिरी ट्राई मार रहे हैं क्या ये स्ट्रेस में रहता है कि नहीं रहता है, क्या ये स्ट्रेस से उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Three things. So the hottest planet is Venus, sir. Even though it's not as close to the sun as Mercury, Venus is still the hottest planet, sir. Okay. Yes, Neptune. So the coldest planet is Neptune, and the closest. Are you sure? Yes, sir. And the closest one to us is Mars. Is? Mars, sir. Mars. Yes, sir. Okay. What about the latest mission of which was to fly just a couple of days before? Where was it headed for, and what was the purpose? So the purpose of the latest mission was to the one that wasn't launched, sir. So that mission was Gaganyaan 2, I think, sir. So it was a mission to mission to the moon again, sir. I think Mangalyaan. So I wouldn't remember. I don't recall that, sir. I'm sorry. Okay. It has been rescheduled now? Yes, sir. When it is rescheduled? So they haven't given us a tentative date because of. My last question. Recently, the budget has been announced. Yes, sir. Tell me, as far as defense is concerned, or for that matter, 3 highlights of the budget, and what is there for defense in that? So 3 highlights of the budget were that they're pushing electric cars, first of all, by giving them a subsidy of about 1.15 lakh. So that's a greener initiative, sir. The 2 other highlights are the fact that the budget for defense hasn't increased. So it's still about 1.6% of our GDP, which is extremely low. So that is my opinion of it, sir. Given the fact that NATO requires even small countries to spend at least 2% of our GDP, sir. We're not just getting outspent by China, sir. In terms of actual hard cash, sir, we're getting outspent on the terms of percentage of GDP also, sir. They spend around 6%, sir. So the problem with us spending only 1.6% is the fact that our army is so large and it requires our armed forces are so large and they require modernization. Thus, modernization cannot take place until you increase the defense budget. Okay, Tejas, suppose I ask you to change 2 things in the country, and being the advisor to the Prime Minister, you have the power to instantly change it. Yes, sir. What would you like to change? अब जरा सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है भाई, तुमसे कोई ज्ञान वाली बातें तो मांग ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। सवाल सिंपल सा ये है कि भाई बाकुनी सर ने कहा है कि तुम आज प्राइम मिनिस्टर साहब के ना जनरल सेक्रेटरी हो, मतलब कुछ खास हो हाई लेवल पे, तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप ये काम करो। नाउ दिस क्वेश्चन, देखो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, रिकमेंडेड कैंडिडेट नहीं, पर लॉजिक मुझे ये कहता है कि जो हमारे देश में करंट प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही होंगी उससे रिलेटेड होगी। नाउ मुझे समझ में आता है कि एक सबसे पहले जीडीपी की प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमी की। दूसरी जो प्रॉब्लम चल रही है
वो ये चल रही है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन लेवल है वो बहुत बढ़ रही है। एंड तीसरा हम कह सकते हैं सैनिटेशन की सरकार भी उस पर बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही है। तो मैं कुछ ऐसा बोलता। अब देखते हैं चेजस भाई क्या कहेंगे। So first, I'd increase the ability for our country to not modernize just externally but internally also. Increase say revenues to startups in defense such that we can actually own, India as a country can own intellectual property rights when it comes to defense, and we don't have to rely on other countries. So another thing I would make sure would be the implementation of infrastructure projects is done better and on time, sir. Okay. Okay. Tell me, what are the two challenges our country is facing? The biggest challenge today. So the biggest challenges would be with the respect to our slowing down economy, sir. So given in the last quarter, during the election time, our economy did slow down, sir. Okay. We need to bring it back up onto pace, sir. And that's a big challenge because only if we continue growing at the rate we continue growing, will we be able to progress, sir. What else? Another thing would be, sir, connectivity to say central and say the Orissa belt of. So, in your opinion, the employment and the population and the pollution doesn't have a that kind of seriousness which people has been calling it. Not necessarily, sir. I think that once you start educating people, so like I said, once you start educating this certain sector of India, so increase connectivity, etc. From there, you increase connectivity, you increase education. So you increase education, you not only increase people who can take up jobs, but you also increase innovators, etc. People who can actually make jobs, sir. So job creators increase, the employment problem is solved. Once the employment problem is solved, so the economy automatically bounces back, sir. Okay. Okay, Tejas, I've asked you a lot of questions. Anything you would like to ask me? Nothing at this point. Okay, all the best. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Video is ended now, and video was amazing. That person was very intelligent and he's very wise also. He also know how to tackle the situation even when he was thrown into a stress situation. That was amazing. See, the knowledge part was okay. I personally feel कि हाँ चंद्रयान में कुछ अटक गया, कौन सा प्लैनेट ज्यादा कोल्ड है, कौन सा हॉट है, ठीक है वो अटक गया, या कुछ है फर्स्ट नोबेल प्राइज उसको मिला अटक गया. बट दैट वाज गूगली क्वेश्चन. दोस गूगली क्वेश्चन आई पर्सनली बिलीव कि वो इसलिए दिए जाते हैं कि बंदे को स्ट्रेस में डाला जाए पहले, या तेरे को नहीं आता, इतना बेसिक सवाल नहीं आता, अब देख तू स्ट्रेस में न्यूट्रल रहता है कि अब तू यहाँ से नहीं निकल पाता. सो दैट्स गुड. सो इट्स फाइन. मतलब वो वहां पर भी कंट्रोल रहा, वहां पर उसने ध्यान रखा कि मैं स्ट्रेस में ना जाऊं, अपना जो पेस है, अपना जो पीस ऑफ माइंड है, मैं वहां पर रखूं, एंड ही वर्कड आउट. तो दैट्स ऑसम. प्लस बिफोर दैट अगर हम अगर उसको एयरफोर्स की बात करें, सो दैट कैन नॉट बी चैलेंज. उसको एयरफोर्स का जड़ पता था कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं फ्लाइंग ही क्यों कर रहा हूं, वजह क्या है, क्या एयरक्राफ्ट है, क्या है. अगर एयरफोर्स में स्कैम की जो बात आई थी, डेसॉल्ट एयरक्राफ्ट की, तो वो कितना सही है कितना गलत है, उसको उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते. एंड दैट शो कि यार बंदे में ना एक ग्रेड है कि यार मुझे फाइटर पायलट बनना है या फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज. एंड पर्सनली आई बिलीव कि जब बाकुनी सर ये बात सुन भी रहे होंगे तो बड़ा ही एक अच्छा इम्पैक्ट बन रहा होगा उसके बारे में दिमाग में, यार इसको अगर हमने छोड़ दिया सिर्फ ये चुन्नू मुन्नू सवाल की वजह से कि नोबेल पीस प्राइज किसने, मतलब नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला, या नेपट्यून या छोटा मोटा, सो इट विल बी आर्म फोर्स की ये एक बहुत बड़ी गलती होगी. उसके बाद हाँ, वेट का एक इशू था कि उसने वेट को थोड़ा और कम करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और जब जहां पर प्रायोरिटी ही फिटनेस है वहां पर आपने नहीं दिया ध्यान, तो ऑब्वियसली एक वहां पर एक लूप होल होता है. प्लस अगर आप मेडिकल के स्टैंडर्ड्स देखें, वो बीएमआई से कम 6 से 7 किलो नीचे होते हैं कि जो फिट बंदा होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 5'9" to 5'10", so the exact weight of me for according to army standard is 60 to 66 kg. so मुझे उसी वेट कैटेगरी में होना चाहिए, जबकि मेरा जो बीएमआई का वेट है दैट्स इज अराउंड 69 to 72. मैं इस बीच में होना चाहिए, पर बीएमआई से मुझे नीचे लाया जा रहा है. तो इसका मतलब ये बात पता होनी चाहिए, और वो ऑलरेडी ओवरवेट थे, तो उनको बीएमआई से और नीचे लाने में तो काफी समय लगा होगा तेजस को. सो आई होप उन्होंने मेडिकल भी क्लियर कर लिया हो सक्सेसफुली, बिकॉज आई कम टू नो ही वाज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट. फिर इसके बाद अगर हम बात करें इनिशियल वाले पार्ट में, जहां पर उन्होंने जवाब दिया था कि वो एक रिपीटर है, राइट,
और उनसे पहले वाले अटेम्प्ट में क्या गलती हुई थी। सो उसका भी उन्होंने बड़ा अच्छे तरह जवाब दिया। और ये बात बाकुनी सर भी शायद मानेंगे कि वो जो जवाब था वो ये बात बता रहा था कि सामने वाला अपने ऊपर काम करके आया है। मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की है, अब नहीं होगी, ये बात उसके शब्द से पता लग रहा था। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। सो आई पॉसिबली दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक इतना बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलता है। सो यू गेट चार्ज अप। So I wish all the best to Tejas, and I wish getting such a brilliant mind person as a flying officer is an honor for a nation. And surely the chest will be widened up, the smile is more an inch wider of the parents also, and Bakuni sir also. That's a very honorable work. So that's end. I hope you like the video. And again, I like to invite you, if any video you like me to do reaction plus take out the knowledge takeaway from it, please put in the comment section and put your views under the comment section. Jai Hind, take care, bye bye. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।